Good morning, student. We read chapter number 10 from class 4 EVS book Huttuttu Huttuttu. This chapter is based on a game named Kabaddi. Okay, and other name of Ched Cheddu Guddu, Huttuttu, Chu Kit Kit, Hadudu, कबड्डी और इसके अलावा भी और भी नेम इसके हो सकते हैं। क्या होता है इस गेम में हम वी रीड seven players at a time. Total each team have 12 players and 7 players play at a time and 5 are reserve player. Okay, इस तरह का एक कोर्ट होता है, दिस मिडिल लाइन. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कर्णम माहेश्वरी के बारे में. हु इज दिस? दिस इज कर्णम माहेश्वरी. शी इज कर्णम माहेश्वरी, वेट लिफ्टर. ओके, सो आगे पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. अ स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर्स. Look at this photograph. Okay, don't they look like simple grandmothers, but they are different. This photograph, they all three look like simple grandmothers, but they are different. How can? Read. The picture is of the three sisters. They three are sisters: Jwala, Leela and Hira. Jwala, Leela and Hira. They live in Mumbai. Where? In Mumbai. All three of them played kabaddi and taught the game to others. All three kabaddi players. Okay. Jwala tells, when we were young, girls were not allowed to play this game. Jwala tells what? When we were young. जब ये तीनों यंग थी तब गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. कबड्डी गेम गर्ल्स को नहीं खेलने दिया जाता था. पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नो बडी वुड मैरी देम. पीपल थिंक दैट इफ गर्ल्स प्लेड दिस टाइप ऑफ रफ गेम्स then nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. And वो कहते थे, people say the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. और ऐसा सोच के वो क्या गर्ल्स को कबड्डी खेलने से रोकते थे. 2 point there. First is when people thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. And second, कि girls wear boys' clothes. So, why they stop girls from playing? Okay, the sisters were young when their father died. When they all three sisters, Jwala, Leela, and Hira, were young when their father died. Their mother and mamas means maternal uncles, brought them up. Okay, both uncles used to play kabaddi and kho. जो उसके मामा थे वो क्या करते थे? कबड्डी एंड खो खो खेलते थे. दे इनकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी एंड देयर अंकल्स इनकरेज देम टू प्ले kabaddi. Jwala and Leela talk about their experiences. Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Almost how many years ago? Almost 50 years ago. When they, Jwala, Leela and Hira started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. उससे पहले कबड्डी गेम only boys play kabaddi game. Okay, parents did not let them play the game. पेरेंट्स उन्हें गेम नहीं खेलने देते थे. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. ओके, बट दे थ्री सिस्टर फेल्ट दैट दे शुड प्ले एंड हर अंकल्स एंड मदर सपोर्ट देम. Okay, we three learned the game and some other girls also joined us. We three means Leela, Hira and Jwala learned the game and some other girls also joined them. We formed a kabaddi club. They formed a
formed a kabaddi club which is active even today. जो अभी तक क्या है चल रहा है कबड्डी क्लब मुंबई में. ओके, रिमेम्बरिंग दूज डेज, लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस. लीला और हीरा जो सिस्टर हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जब वो उनके मैचेस की बात करती हैं. दे टेल हाउ दे वॉन्ट सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज. कि उन्होंने दे टेल हाउ दे वॉन्ट सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लॉस. मीन्स कुछ गेम जो वो हारने वाले थे उनको भी उन्होंने किस तरह से जीता. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल. ड्यूरिंग दूज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन. उन मैचों में क्या हुआ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई. वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच. एक बार क्या हुआ, वो डिफरेंट टाउन में गए एक बड़े मैच के लिए. लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग. मैच कब शुरू होने वाला था, शाम को 6:30 पे. वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock. और वो कहाँ चले गए मूवी देखने 3 to 6 o'clock. वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच. उन्होंने सोचा कि वो मूवी देख के और 6:30 तक वापस मैच के लिए पहुँच जाएंगे. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. As soon as the movie started, जब मूवी स्टार्ट हुई तो we noticed some noise and disturbance. कि some noise और disturbance उन्होंने नोटिस किया. It was created by our मामा. ये किनके द्वारा क्रिएट किया गया था, उनके मामा. Who was looking for us in the hall with a torch. जो उन्हें सर्च कर रहे थे सिनेमा हॉल में टॉर्च से. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. और उन्होंने जो उसके मामा थे उन्होंने उन्हें क्या किया, सिनेमा हॉल में ही डांटा. ओके, सो नाउ सम क्वेश्चंस. द सिस्टर सॉरी आगे नेक्स्ट इज द सिस्टर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन. जो ऑल थ्री सिस्टर्स थी, ज्वाला, लीला एंड हीरा, उनको कबड्डी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज आई लेकिन उन्होंने उसे अपने फ़न को रिड्यूस नहीं होने दिया. हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच. नाउ हीरा इज़ अ कबड्डी कोच. सी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एन्जॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी. और हीरा विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू should enjoy and play many games, especially kabaddi. Okay, so there are two questions. Have you learned any game from a coach? Which one? So right here, if you learn any game, okay, like cricket, football, from a coach. Do you know of anyone who has learned any game from a coach in your friend circle? If anyone have who learned any game from a coach, then write here. Okay, your friend, your cousin, your big brother, anyone. Okay, now we watch some pictures here. Who is she? This is Sania Mirza, a tennis player. Okay, first who is she? She is Karnam Malleshwari, a weightlifter. Okay, now these three sisters, Leela, Hira and Jwala, they are kabaddi players. Okay, and this she is Sania Mirza, tennis player. Who is she? She is Saina Nehwal, badminton player. Okay, and the last one is Mithali Raj, who is she is a cricketer. Okay, former Indian skipper. Okay, so do these questions, these two questions in your notebook and share in the group. Okay, thanks.